hota that now that we're both from Delhi and you come to Bombay. So what are 3 things that you love about Bombay? 3 मुश्किल हो जाएगा, 1 या 2 पूछ ले यार. क्या बात कर रहा है? I'm just kidding यार. देख, honestly, we've had lots of discussions on this and I love Bombay as a city. वो अलग बात है यार, सड़कें नहीं है क्योंकि हम जैसे और बहुत बाकी इतने सारे लोग आके शहर में बसना चाहते हैं because of work and all. Yeah. The city is great, the people are great, everything is great, but I feel it's a me problem also, more than like a this is my perspective of course. तो यार मेरे साथ सीन क्या है कि so I have always lived in Delhi before this, right? मेरा कॉलेज भी दिल्ली में था, मेरा स्कूल दिल्ली में था, मेरा सब, मैं कभी बाहर रहा ही नहीं. I've never lived in a hostel. जैसे तू ग्रेजुएशन के लिए बाहर गया था, मेरा कुछ सीन नहीं था बाहर जाने का. तो मेरे साथ क्या है कि I've had the same sort of friends जो बचपन से थे. I've had all the connections that I still have, they're very deep rooted. So one thing that, you know, it eats me up each day is that like, I want them, you know, I get a feeling of missing out that connections. For me, it's always been humans first. पता नहीं क्यों मेरे लिए ना, मतलब अब ये सही है गलत है मुझे नहीं पता, but मेरे लिए ना मतलब सबसे ज्यादा important है human connection क्या है. And जो भी मेरे whatever relationships that I have, and for me a big part of my life is my friends. Besides my mom and dad, my friends are like, I think मतलब मुझे लगता है मेरे लिए वो टॉप है, like above everything else. So that kind of I feel कि आप एक शहर छोड़ के आ रहे हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. I don't know if somebody is watching this and they want to come, and अगर आप किसी दूसरे शहर में नहीं रहे तो यार I think Bombay is a very fast-paced city. Of course, the people are really nice, and I have met some wonderful people here. There's no doubt about it. काफी अच्छे लोग मिलते हैं. But ना यार I think everybody is so busy in the journey कि आपको वैसा वाला टाइम कोई नहीं दे पाएगा जो शायद आपको, जो मैं सीख कर रहा हूँ, जो मेरे दिल्ली में जो like the friends that I have, that you know the connection that I have there, वो आप नहीं सीख कर सकते. I don't think, at least in this point of time. And also I feel कि बॉम्बे में अगर काम है then it's the best city to be in. But काम नहीं है then it kind of eats you up because it's so fast paced. मतलब मैं क्या बताऊँ ब्रो, हम दिल्ली से आए, like it's the capital of the country, और मुझे तो ये लगा था कि मैं गाँव से उठ के आ गया हूँ ब्रो. मतलब and we live in like the south part, and मतलब वो हमें लगता था कि इससे ज्यादा क्या ही मतलब fast paced होगा. But then yeah, we came to Bombay and yeah, we saw that things are not the same everywhere, man. Yeah. अलग है. But हाँ यार, having said that, I think the journey ये मेरी journey है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है. Maybe when I have work, I love this city. And also I think it takes time. यार मेरे साथ क्या है कि there's one more thing that really eats me up, I'll tell you. और ये मेरे साथ पता है पिछले 2 महीने से रोज सुबह उठ होके मतलब रोज हो रहा है, and it's killing me. Like every time I wake up in the morning, I just पहले 10 मिनट ना I miss my mom, dad. Honestly, dad more. I don't know. I think I love him more maybe. Sorry, mama, but like I don't know, man. I just miss them so much. मुझे ऐसे ना मतलब मैं 5 मिनट like depressed feel करता हूँ, फिर मेरे को अपने आप को फटाफट then I get back to my whatever the things that I have to do. I do my vocal exercises, 10-15 मिनट meditation कर लेता हूँ भाई, जो बहुत जरूरी है करना. Tell me about it. हाँ. तो वो सब करता हूँ, and then I don't know, that eats me up यार. मुझे लगता है कि you know I've seen families where like you know everybody has like I know people like I know some of my friends are not close to their families, like, and it's fair because they've not had the same experience. But like I think I'm so fucking blessed. I got a lot of love from my parents. मतलब बहुत प्यार मिला bro, मिलता ही है जो भी. तो that eats me up, that I feel कि मुझे इस age में like when they're growing old, it haunts me that I'm not there with them. That's the only thing, and that's शायद ये सब इसलिए भी लग रहा है क्योंकि काम नहीं है ब्रो. काम होता है तो शायद ना लगता, और कुछ अलग tangent पे होता. I don't know man, yeah. So I miss Delhi a lot, and if it was not this profession, then मैं तो भाई घंटा दिल्ली छोड़ के मैं नहीं जाता कहीं, बल्कि मैं ले आता बॉम्बे से यहाँ पे. नहीं, but it's fair. And also I've also realized a lot of people, every Bombay person I meet, no, there's only one thing that they only say one thing to me कि यार तू बहुत अच्छा है, तू लगता नहीं है दिल्ली से. क्या मतलब है? What the fuck bro? क्या मतलब? एक तो दिल्ली का नाम पता नहीं इतना लोगों ने खराब कर रखा है जो कि है नहीं यार. I don't know. Yeah. No, but like with me, it's just your experience is completely different. No? Exactly. Like I am completely opposite in the sense that I've gotten a lot of love from my parents, of course, from my family. But the question is, do you love them like that? No, I genuinely do. The thing is that because I was put in a space of being very independent at a very young age. Correct. Like I was just fresh off school and I was sent and I had to manage everything on my own. And then initially, bro, first 2 months
same feelings. हाँ. Waking up, butterflies, missing home, हाँ. missing my friends, missing हाँ. my boys, Yeah. calling them, trying to stay in touch. But then eventually I realized that I'm like, now I can live alone, right? I am more than willing to live alone. हाँ. ठीक है, in the sense that You like that aspect. I love it, also. bro. Like for me, it's like it's the best thing ever. From like even if it wasn't Bombay, it was say Bangalore, तो Chennai, किसी भी whatever, city में रहता. any city, right? Again, that fact is also no because you don't have the deep rooted connections. तू पढ़ने बाहर चला गया, you हाँ. बाहर था. Yeah. This also helps, no, in the journey. It is. This It really is helps, 100%. Like I think right now from Delhi, I would have 4-5 set of boys that I'm close to. That Yeah. also you meet later in life, not बचपन से. Yeah, like I met them probably like 7-8 years ago. Not like since we were. The one of them is like since my बचपन like से. childhood friend, हाँ. right? Apart from that, like these are people that I've just met, and then now I've made an effort to make sure that I have those deep rooted connections with at least some people in my life or some people from Delhi, so that pulls me back to that city. Yeah. ठीक है, नहीं तो it's like I would forget my roots, right? Even with like even when it comes to mom and dad now, they're so busy. वो उठते हैं सुबह 5 बजे, they're working till 10 p.m. Right? And even if I'm at home, I've seen that culture of just just everyone being busy. And being very independent. And being very independent. Which is like great. Yeah, mom would do her own thing, dad would do her own thing, my sister's working in Dubai, everyone's doing their own thing. Wow. Right? We would call like every day thinking, just figuring out how's the day's been, all of that, basics. But जैसे तू बात करता है जैसे फोन पे, मतलब 30 मिनट 40 मिनट मेरी बात होगी मम्मी से 2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट, ठीक है, and it's not like she's okay with it. Yeah. I'm okay with it. Both of us are completely okay with it. My mom is not. I mean, I don't know. Sometimes it's irritating, but like I'm very grateful. For the love. Yeah, 100%, bro. She can't live without calling me 5 times a day at least. तो मतलब भाई 5 बार तो करनी पड़ती है. हाँ, मुझे ये होता है, पता है मेरे को लगता है मैं और मम्मा ज्यादा देर फोन पे बात नहीं कर सकते भाई. मतलब I think we're different people, but like I love her. Yeah. And I think she's the best person that's happened to me. Yeah. I don't know यार, but like again at the same time जब बीमार होता हूँ तो भाई मम्मी की याद आती है. तो वो और तो रात के खाने की. Bro, fuck यार. चीला. Oh damn. यार अगर आप बॉम्बे आ रहे हो और अगर आप दिल्ली या किसी नॉर्दर्न यूपी से या फ्रॉम लखनऊ या किसी उस सिटी से हो जिनके लिए फूड इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सोच समझ के थोड़ा प्रिपेयर होके आना भाई. यहाँ पे खाना मिलना अच्छा बहुत मुश्किल है. हाँ. मैं बता रहा हूँ बहुत मुश्किल है. हमें खाना क्या, पहले तो आप आओगे, पहले घर ढूंढ के दिखाओ फिर बात करेंगे. I mean, it's like it's just very different. Like their taste buds are very different. As of course you go अब तो from बोल ले different डिफरेंट things. कैमरा के आगे, मतलब अच्छे नहीं मैं है नहीं, तो ये मैं बोलना अच्छा बुरा चाहता तो नहीं बोलूंगा, but like I just feel that it's really different. Certain elements of Bombay with me specifically, what I miss about Delhi the most, जो मुझे बॉम्बे में नहीं मिलता है, Don't say winters. food, huh? Winters. Ah, Right. yeah. दिवाली के टाइम पे दिल्ली की स्मेल भाई हवा में प्लीज मत अलग बात होती कर यार, मत बात कर. ठीक है? शिट ब्रो. अलग ही स्मेल होती है, और वो स्मेल आपको यहाँ पे कभी नहीं मिल सकती. इंडिया में आई डोंट थिंक कहीं भी मिल सकती. मे बी ऑफ कोर्स यूपी, नोएडा, मतलब मुझे लगता है हमने दिल्ली में दिवाली नहीं देखी तो हमने कुछ नहीं देखा. And it's not just any other festival, bro. There's a mood to the atmosphere, and that mood you just cannot replicate in any city in this country or in the world for that matter, right? एक तो यार कोई कार्ड्स भी नहीं खेलता यार, क्या लोग है भाई. अबे भाई नहीं खेलते. मजाक करो, हम भी नहीं खेलते यार. नहीं खेलते. Gambling is bad, boys and girls. Yeah, but it's something like that. And tell me about finding the house, since You better thank them for finding you the house, bro. Like honestly telling you, if it wasn't for him, I swear to God, I would never be able to. I would find a house, but I would pay over the odds. अगर ब्रोकर किसी को 30-40,000 बोल रहा होगा, मैं 50 दे दूंगा, because I pay for convenience just to be in a sphere where I don't have to work hard to find a house or find a house help or something like that of that sort. Him on the other hand, the deal he makes with these brokers, मैंने कहा तू भाई तू किस लाइन में काम कर रहा है, तू क्यों कर रहा है, right? It's actually a fact. So we were finding a house, okay, and there was this broker. उसने बोला कि भैया 65,000 से नीचे हम जाएंगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है. और ये इसने मुझे बोला, ठीक है. सबसे पहले मैंने कहा चलो भाई ठीक है यार, 65 ठीक है, डूएबल, आई कैन लिव विद इट, आई डोंट वांट टू बार्गेन ओवर दिस एंड दैट. नाउ माय मैन हियर, राइट, माय मैन हियर हु हैज दिस in his blood to always negotiate. मतलब एक लेयर्स की टॉफी होगी, उसके लिए भी ये negotiate करेगा. नहीं करूंगा. अच्छा चलो उस पे नहीं करेगा, खाने की चीज. You never know. But you never know, exactly. 65,000 उसने बोला,
ठीक है, और उसका उसका अप्रोच ये था कि He नहीं started नहीं with भैया, 70 just by the way. started with 70, ठीक है, whatever, 65 was to 65 70 whatever, and then he wasn't willing to come down. He was like, नहीं ब्रो, हमारे मेरे पास और भी पार्टी पड़ी है, एक तो पता नहीं पार्टी बोलते हैं क्या पार्टी। तो भाई अच्छा एक और चीज, यहाँ पे जो ब्रोकर्स होते हैं उनका लेवल ब्रो प्राइम मिनिस्टर जैसा है हमारे यहाँ पे। Yeah. They are so busy, they won't even answer your call। मतलब 45 मिनट्स मैंने सनी लियोनी से मूवी करी है, मुझे 45 मिनट धूप में खड़ा करा ब्रोकर ने। मैंने साए हो, ठीक है, एक्टर हो ना हो, ब्रोकर के सामने यू जस्ट समवन हु नीड्स अ हाउस। दिस गाय, ठीक है, got us a deal, and that 65,000, which means that the house will have nothing, right? Not even a like AC वैसी कुछ भी अरे नहीं, पानी का गैस ग्लास भी कुछ नहीं भी नहीं, रखते हैं, पानी का प्लास्टिक ग्लास का भी भी नहीं नहीं, रखते हैं। nothing at all. He got us a deal. He spoke to him, and I don't interfere when he speaks to him because I know that I'm going to say something which will be stupid, right? He got us a deal for 60,000 with 3 ACs attached. जो बंदा 65, 70 के नीचे नहीं आ रहा था, 60,000 with 3 ACs attached. And I believe that I can never ever reach that point where I'll be able to negotiate that much. I'm shit at it. I'm awful. I mean, like, मुझे कोई 300 रुपए की चीज बोलता है, मैं उसको बोलता चल भाई तू 320 ले ले, लेकिन अब मेरे से बहस मत कर, ठीक है, तू ले ले। एंड ही ऑन द अदर हैंड, एंड दैट्स व्हाई आई से दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई फील दैट life teaches you that what has taught you that hasn't taught me, like in the sense I probably had it easy all the way, or maybe I think was it's the never, experience, and everybody's journey is different. Maybe it will happen later in your journey. Something might happen later in my journey. yeah, So, and it's happening to me right now because like now because of him I'm able to see that, you know, that okay, you know what, every penny counts, right? You cannot take it for granted at all. That reminds me of the electricity bill, man. Yeah, bro. Bro, यहाँ पे बिजली का बिल भी ज्यादा आता है, मैं बता रहा हूँ बाकी सब शहरों से। तो see, money is, I think, so both of us, I think we're from fairly privileged, not rich, we're not rich at all। एक तो ब्रो तुम मेरे से पूछ तो एक बार, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भाई? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, लोगों को लगता है मैं अमीर हूँ ब्रो, मैं बिल्कुल अमीर नहीं हूँ। मैं कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। आई थिंक मे बी लाइक, आई डोंट नो क्यों लगता हूँ, दिखता हूँ क्या मैं अमीर दिखता हूँ ना? कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थैंक यू, ऐसा तो नहीं, आई लव यू, थैंक यू, सॉरी फॉर ब्रेकिंग द फ्रेम बट आई लव यू। ऐसा वो पता नहीं क्या सबको ऐसा क्यों लगता है, बट नो, आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। लाइक ऑफ कोर्स माय डैड यूज्ड टू बी रिच एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई डिडंट इवन विटनेस इट, आई वाज वेरी यंग that time, but I'm from a very middle class family. So yeah, what I meant was कि यार, it's money is a big thing when you're moving to a city like Bombay, because we witnessed कि यार पता भी नहीं चलता कि पैसे कैसे खर्च होते हैं ब्रो। मतलब it's 3 times as expensive, bro, like Delhi से तो। and I think that's also money, and plus यार acting में एक ऐसा प्रोफेशन है कि आपको नहीं पता कि आपको कब काम मिलेगा। Like I'll tell you my example. I honestly, like, among the two of us, I'm the one who gets more auditions. I audition more, but you know, the last time I worked was when it's been what, like, एक कोई शूट करा था 2 महीने पहले, और उससे पहले 6-8 महीने पहले, I don't even remember when. So this is the, you know, the waiting time that an actor always has to go through. Or I don't know if it's my journey only, whatever it is, but like I think it happens with everybody. सबको भाई काफी वेट करना पड़ता है। तो before you move to this city, थोड़ा सोच के ही आना यार। I'm not discouraging you again. I don't know, बेचारा कोई पॉडकास्ट देख के सोचे कि पता नहीं क्या ही देख रहा हूँ मैं, बट ऐसा नहीं है यार। Of course, I hope everybody's journey is different, and I hope आप या जो भी देख रहे हो आपको आते ही काम मिल जाए। But हाँ यार, because I've seen a lot of people here that there is a lot of patience that you require, and you need to be way too क्या होना पड़ता है भाई, पेशेंस तो चाहिए। as patient as a monk. Patience as a monk, bro, उससे भी ज्यादा ब्रो। मतलब it's hard यार। Having said that, आ जाओ, I feel कि ज्यादा किसी की सुननी नहीं चाहिए, खुद की सुनो। मतलब हमारी तो बिल्कुल ही मत सुनो, और मेरी क्या सुन रहे हो, मेरे को तो काम मिला नहीं। नहीं bro, I think but yeah bro, तो ये एक सीन है। and dude, मतलब अब तो मुझे लगता है यार, एक तो यार ऑनेस्टली यार, थिएटर कर लिया, बैरिजॉन करा 6 महीने, 3-4 साल थिएटर करा, उसके बाद मैंने भाई कितनी ज्यादा सारी, ऑलमोस्ट आई हैव टेकन ऑल द एक्टिंग वर्कशॉप दैट देयर आर, ऑल द गुड वंस, द बैड वंस करके भी पता चलता है कि गुड क्या है, बैड में क्या नहीं है। बैड वंस आल्सो आर गुड वंस, बट नाउ ना वो हो गया कि भाई सीख लिया भाई, अब जितना सीखना था सीख लिया, बाकी लाइफ में सेट पे सीखूंगा या लाइफ में सीखूंगा, क्योंकि अब now it gets monotonous only, or at least in the phase that I am. I've done like a lot of workshops, हो गया भाई अब।
तो ये सब भी भाई कर लेना अगर आ रहे हो तो एक्टर बनने। बाकी My piece of advice would just be that if you come here, come with the purpose of first training yourself. Always. Exactly. Do not take it for granted that you're a naturally born actor, because I don't, in my experience, Yeah. it could be wrong. Yeah. There's not one actor in the world Yeah. who has not trained himself. No fucking body. You cannot be born. You can be born a genius, but you can never be born an actor. I think you can learn the craft easily, maybe Yeah. a little quicker, Yeah. and that also depends on your life experiences. किसी ने ज़्यादा life experiences जिए, and also bro, luck. Talk about luck. as a Luck, factor. bro. Luck. So yeah, man. Like It's we have huge. friends from Delhi जो move भी नहीं करे and they are doing so fucking well that we Yeah. can't even tell you. Yeah. So I think now, especially after COVID, it's not even important for you to move to Bombay and work. Of course, it helps you personally. It pushes you more because आपके सर पे rent है और ये सब चीजें, तो it might push some people, it might bring down some people. तो वो होता है, but हाँ यार, अब मुझे नहीं लगता कि शहर, तुझे लगता है क्या कि इतना ज्यादा फैक्टर है जो पहले होता था? मुझे लगता है कि इतना बड़ा नहीं है. नहीं, of course help करता होगा, but so we moved here in 2020, right? एक तो बॉम्बे से जर्नी भी बताओ भाई कि हम कैसे कैसे कब मूव करें. 2020 we moved in. It was, I think, February. We moved February. in. You moved once before me. Yeah, I'd moved because again I was shooting for the movie, and then I was. Actually, no, class I got the year we moved in. Like it was हाँ, after. तो बाद में मिला था. Class was after the pandemic. Before that, we moved in, and then उसके बाद the pandemic within 2 weeks. हम मूव करे थे और 15 दिन हुए थे हमें मूव करे हुए, और फिर क्या हुआ? फिर आया कोविड. फिर कोविड. तो and the worst part was that we had a 11-month lock-in ना, 11 महीने तक हमें रेंट देना था. मोस्टली यहाँ पे लॉक-इन्स भी होता है कि 6 महीने या 11 महीने तक आपको पैसे देने हैं. हाँ. तो वो सब सीन था यार. So we had to go back and then we again, but we had to pay the rent being from Delhi.